Okay, students, now worksheet number 48. And this worksheet is about the area of triangle. This worksheet is about the area of triangle. If we have a triangle here, so, and let's say this is A, this is B, this is C. For finding out the area of any triangle, we have a formula. The formula is half. Acha, opposite to A is a small a side, opposite to B is a small b side, opposite to C is a small c side. For finding out the area of any triangle is equal to half. अगर मैं AB से चलूं, AB sin C, ये वाला एंगल आ जाएगा. एरिया इक्वल टू हाफ. अगर मैं AC लिखता हूं, AC, तो साइन के साथ क्या आ जाएगा? साइन के साथ क्या आ जाएगा? B. और अगर मैं BC लिखता हूं तो साइन के साथ क्या आ जाएगा? A आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस, अब आप देखिए इसको याद कैसे रखना है. एरिया इक्वल्स टू हाफ, area equals to half the two sides and sine of the included angle. Half here, the two sides and sine of the included angle. जो भी दो साइड्स के दरमियान में एंगल आ जाएगा उसके साथ साइन लगा दिया जाएगा, तो you will get the area of any triangle, right? अब सुनिए, I'm doing the first part. Part A, stop working. Part A, area is equal to half the two sides. 7, 16. Sine of 48. This is the first part. Second part, half 8 into 8 sine of. Third part, half 8 into 6 sine of 150. What is the answer of part A? What is the answer of part A? 41.6 is the area of part A. Are you clear? Now, question number 2 is, in the triangle PQR, here it is P, here it is Q, and here it is R. PQR is 74. जो दरमियान में होगा उस पर एंगल बनेगा. Here it is 74. PQ is 23.7. QR is 18.2. We have to calculate the area of the triangle. It's very simple now. Area is equal to half the two sides. 23.7. 18.2. Sine of the included angle, which is 74. By this, we'll get the final result. What's the answer? 207.3. Are you clear? Are you clear? Now, sir. Now, question number 3. There is a kite, a diagram of kite is here, and we have to calculate the area of the kite, right? How can we calculate the area of the kite? In this, if this angle is 61, so the complete angle is 61 plus 61, 122. The complete angle is 122, right? If this side is 2, then this side is also 2. Yes or no? Yeah. If this angle is 26, then this angle is also 26. And 26 plus 26, you will get the final complete angle, right? If this side is 4, then this side is also equal to 4. So now, we have to calculate the area. We have to calculate the area of the kite. So if we calculate the area of the above triangle plus the area of the below triangle, area of the above triangle is half the two sides, 2 sine of 122, the first area, and the second area is half the two sides, 4 sine of 26 plus 26, 52. By this, you will get the two areas, add both of them,
So we will get the final result. So what is the answer of the first area? 1.69. And what is the second area? 6.30. So what's the final answer? 7.99, which is approximately equals to 8. The area is 8 feet squared. Are you clear? Okay, students, now question number 4. Question number 4 is we have to calculate angle R, we have to calculate angle Q, and we have to calculate the length PR. We don't have to calculate the area. यहाँ पर हमें area calculate नहीं करना. We have to calculate the size and unknown angles, right? For finding out the unknown size and unknown angles, again I am making a triangle. Again I am making a triangle. Here it is A, here it is B, and here it is C. Opposite to A is a small a, B is a small b, opposite to C is a small c. Now, according to this, we have a rule called sine law or sine rule. I'm writing it sine law. What is the law called? Sine law. And the sine law is sine A over opposite side A must be equal to sine B over B must be equal to sine C over C. These ratios are equal. These ratios are equal. This is called sine law. And sine law is to calculate unknown sides or unknown angles. Unknown sides or unknown angles, right? This is called sine law, and with sine law, we have another law called cosine law. What? Cosine law. अब सुनिएगा. What we have in the cosine law? Cosine law में बच्चों हम किसी साइड से स्टार्ट करते हैं. किससे स्टार्ट करते हैं? किसी साइड से. मैं स्टार्ट कर रहा हूं ए से, तो सुनिएगा. ए स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग साइड का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इन दोनों का प्रोडक्ट बी सी कॉस जो साइड है उसका ऑपोजिट एंगल कॉस ए, कॉस ए. नाउ इसी तरीके से अगर मैं साइड बी से चलना स्टार्ट करूं तो लिखवाइए आप लोग खुद. ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सॉरी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos b. अब अगर सी स्क्वायर से स्टार्ट करूं तो लिखवाइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c. दिस इज कॉल्ड कोसाइन लॉ. बच्चों कहां कॉस रूल अप्लाई होगा, कहां साइन रूल अप्लाई होगा, तो सिर्फ कॉस के लिए याद रखिए इफ ऑल द फर्स्ट कंडीशन if 3 sides are given, first condition. Second condition, if 2 sides plus included angle, अगर 2 साइड और दरमियान का एंगल गिवन दिया जाए तो कॉस रूल अप्लाई होगा, या अगर तीनों साइड्स दे दी जाए तो कॉस रूल अप्लाई होगा. इसके अलावा तमाम जगह पर साइन रूल अप्लाई किया जाएगा. कोशिश हम ये करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस को साइन रूल से सॉल्व करें. कोई मजबूरी आ जाएगी तो कॉस रूल की तरफ जाएंगे, क्योंकि कॉस रूल में स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं थोड़ी. तो हम कोशिश ये करेंगे साइन रूल से तमाम क्वेश्चन सॉल्व करें. लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हो गई कि तीनों साइड्स गिवन है ट्राइंगल की, वहां पर तो साइन रूल अप्लाई नहीं होगा.
तो वी हैव टू यूज कॉस, राइट। अगर दो साइड और दरमियान का एंगल गिवन है तो फिर भी कॉस रूल अप्लाई करना हो, राइट। नोट कर लिया आप लोगों ने कॉस एंड साइन रूल। Now, okay, guys, according to these laws, we have to complete question number 4. अब आप देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 4 में तीनों साइड्स गिवन है, यस और नो? नो। क्या क्वेश्चन नंबर 4 में दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन है? नो, राइट। दो साइड और इंक्लूडेड एंगल तो ये है ना, इन दो साइड्स का गिवन नहीं है, तो इट मींस वी हैव टू यूज साइन लॉ। इट मींस वी हैव टू यूज साइन लॉ। करते हैं जनाब साइन लॉ के अकॉर्डिंगली। नाउ अगर मैं लिखता हूं बच्चों फॉर पार्ट ए वी हैव टू कैलकुलेट एंगल आर। अगर मैं लिखता हूं इसको साइन आर डिवाइडेड बाय क्या आएगा डिवीजन में? हियर डोंट राइट एनीथिंग, लुक एट द बोर्ड। साइन आर डिवाइडेड बाय 2.8, साइन आर डिवाइडेड बाय 2.8 इक्वल्स टू साइन 112 divided by opposite side, which is 7.2. Now, can I say that sin R is equals to 2.8 times sin 112 divided by 7.2? And after, what is the answer of this fraction? The answer is 0.36. Can I say that sin R is equals to 0.36? And after that, if we have to calculate R, तो sin उधर जाकर क्या हो जाएगा? Sin inverse 0.36. So, what is the angle R? What is the angle R? Sin inverse of 0.36? 21.5. The angle is 21.5. Are you clear? 21.1. Are you clear? Now, after that, we have to calculate angle Q. Angle R आ गया हमारे पास 21.1. Yes, beta. Stop working. Now, part B for angle Q. For angle Q in a triangle, summation of all the angles is equal to 180. So for angle Q, can I say that it is 180 minus 21.1 plus 112? What is the answer? 46.9. This is the result. Are you clear? Summation of all angles equals to 180. 180 में से दो एंगल को सब्ट्रैक्ट किया तो थर्ड एंगल हमारे पास आ गया. And lastly, we have to calculate the PR side. Now stop working, all of you again. Part C, just look at the board. The side PR. If we have to calculate the side PR, then again we are using sine law. So now, can I say that sine Q, and what is Q? 46.9 divided by 46.9 divided by 46.9 divided by PR opposite side equals to anyone sin 112 divided by 7.2. Now, if we have to calculate PR, cross multiply PR. Cross multiply here 7.2 sine 46.9 divided by sine 112. What is the value of PR? No. What is the value of PR? 5.67. 5.67 is the value of PR. Are you clear? Now, guys, question number 5. At P, the angle is 7. The angle of elevation of the top of the cliff is 7. What is angle of elevation? नीचे से ऊपर की तरफ जब देख रहे हैं जो एंगल बन रहा है, that is called angle of elevation. After John has walked 30 meter toward the cliff, John ने यहाँ से walk किया 30 meter toward the cliff. The angle of elevation now 9.1. Find PT.
find PT and find the height of the cliff. We have to calculate PT and the height of the cliff. अब सुनिएगा, अब सुनिएगा बच्चों, this angle is 9.1 given. So what is this angle? Can I say that angle in a straight line is equal to 180? 180 minus 9.1 कितना? 172.9. 170.9, राइट? अब आप देखिए, इस ट्राइंगल को मैं अलग से बना रहा हूं. कौन सा ट्राइंगल? द ट्राइंगल टी पी, द ट्राइंगल टी पी एंड हियर इज क्यू. मैं थोड़ा सा इसको ट्राइंगल को एक्सटेंड करवाऊं ताकि क्लियर पिक्चर बने, लाइक दिस. Now, let's say the triangle is this with P here. Now, what is this angle? This angle is 170.9. This angle is 30. Sorry, this side is 30. This angle is 7. Any confusion in this triangle? No. Right? मैंने ये triangle break करके यहाँ बना दिया. ऐसा ही? Now we have to calculate the PT side. Which side? PT side. Okay. By using sine law. By using sine law. I'm doing, let's say, the PT side. अब आइए, how to calculate PT side? अगर मैं स्टार्ट करता हूं 170.9 से, साइन 170.9 डिवाइडेड बाय PT, ऐसा ही होगा. इन दिस ट्राइंगल साइन 170.9 डिवाइडेड बाय द ऑपोजिट साइड, डिवाइडेड बाय द ऑपोजिट साइड इक्वल्स टू, अब सुनिएगा जरा, हियर अगर मैं लिखता हूं साइन 7, साइन 7, इसके ऑपोजिट पर क्या है? डिवाइडेड बाय QT साइड, राइट? अब सुनिएगा, अब सुनिएगा बच्चों, इस रेशो में हमारे पास PT भी अननोन है और QT भी अननोन है. दो चीजें अननोन, एक इक्वेशन में दो चीजें अननोन, हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. तो इट मींस ये वाला रेशो हम नहीं लिख सकते, हमें कोई और रेशो पिक करना होगा. कैसे? सुनिएगा बेटा. इन दिस ट्राइंगल वी हैव दिस इज 170.9, वी हैव दिस इज 7. क्या तीसरा एंगल आ सकता है? तीसरा एंगल कैसे आएगा? 180 से माइनस कर दीजिए 170.9 और 7 को, क्या आंसर आएगा? 2.1 डिग्रीज का ये एंगल आ गया. एनी कंफ्यूजन? Any confusion? Angle in the triangle is equal to 180. 180 से दो एंगल माइनस के, तीसरा एंगल आ गया 2.1 का. अब मैं लिख रहा हूं साइन 2.1 डिवाइडेड बाय 2.1 के ऑपोजिट क्या है? 30. आ रही है बात समझ? अब सुनिए, PT क्रॉस मल्टीप्लाई 30 साइन 170.9 divided by sine 2.1 divided by sine 2.1. Therefore, what is PT? The PT is 129.5. The PT is 129.5. बात समझ में आ रही? Is this clear? कोई और भी बताया जरा, what is PT? Okay. Now, after that we have to calculate the height of the cliff. The PT side is 129.5. Okay, I'm making another triangle for finding out the height of the cliff. Now, here is the triangle. Now, here is T. This is the height of the cliff. Here it is P. PT side is 129.5.
129.5. This angle is 9.1. We have to calculate the height of the cliff. Let's say I'm saying that this is height. I'm saying that this is height. Is it a right angle triangle? Yes, it is a right angle triangle. Cliff bilkul straight. It is a right angle triangle. For right angle triangle, we don't have to use any rule, any sine law or cosine law. We have to use ratios. So now we have to calculate the opposite side of the angle height. The hypotenuse is given. So what we have to use? Sine. Sine 9.1 is equal to opposite height divided by 129.5. So what is the value of height? What is the value of height? 129.5 multiplied by sine 9.1. What is the answer? Huh? 20.5. The answer is 20.5. Okay, students, there is a confusion here. If this point is P, this is T, and this is the height of the cliff. So beta, the point P is here, the point T is here. We have to use angle which is equals to 7 degrees, not 9.1. Mistakenly, we used 9.1 degrees. जबकि यहाँ पर क्या use होना है? 7 degrees. So use 7 here. And now, what is the result? What is the result? 15.7. The result is 15.7. This is the height of the cliff. Are you clear? Are you clear? That's it. Now, students, question number 6. Mary is in a plane at a height of 20,000 feet. Yes, Lukman. She notices that an island straight ahead is at an angle of depression of 4 degrees. Mary ने आइलैंड नोटिस किया, यहां से 4 degrees का एंगल बन रहा, right? The angle is of 4 degrees. After that, 2 minutes later, the angle of depression has grown to 6.4. Now the angle is more than 4. कितना हो गया? अब 6.4 हो गया. After 2 minutes, find the speed of the plane. Find the speed of the plane. Here it is B. Here it is C. Let's say here it is D. Speed. What is the formula for speed? Speed equals to distance upon time. Now, time हमारे पास मौजूद है. कितना मौजूद है? 2 minutes later. Time मौजूद है 2 minutes का, right? 2 minutes का time है, but we don't have the distance. We have to calculate the distance AB. कि 2 minute में इसने travel कितना किया? 2 minute में इसने travel कितना किया? Height is 20,000. Height is 20,000. अब सुनिए. If I use 6.4 degree angles and the right angle triangle BCD, are we able to calculate the side BC? Yes. By using tan 6.4 is equals to opposite over adjacent BC. What is the length BC? What is the length BC? It says 2 minutes वाला बात करो. जब ये आपने 2 minutes. Yes, it is. It is for actually 2 minutes later, right? That's why the time is 2 minutes, right? 178304.
This is the length BC. Now, I am calculating the length AC. Now I am calculating the length AC by using the big triangle. So tan 4 is equals to opposite 20,000 divided by AC. What is the length AC? 286,013. Therefore, the length AB will be AC minus BC. No problem. The length AB is AC minus BC. Now, what is the answer? 107,709. This is the length. Angle of depression. सुनिएगा. Here, this one. अगर मैं यहां से देख रहा हूं नीचे की तरफ, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. यहां बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. नीचे की तरफ देख रहे हैं ना, तो हमेशा एंगल बनता है पैरेलल टू द ग्राउंड. एक लाइन ड्रॉ की जाती है. हम नीचे देख रहे हैं, एक लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड ड्रॉ की जाएगी. ये जो एंगल मेरी आईज में और इस लाइन में बनेगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट. और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन भी होता है. सपोज हार्ट से. तो इस वजह से हमें वर्किंग इस पर करनी थी, हमने यहां लिख दी. कोई प्रॉब्लम. Yes, after that we have to calculate the speed. Distance is 107709 divided by 2. What is the answer? 538.55. This is the speed of the plane, and the speed is in speed per minute. This is the unit for the speed, right?